Right. Okay, is it visible? Yes, sir. Okay, so in the previous class, I think we have covered all the concept to complete the last exercise and NCRT example as well. Okay, some questions from NCRT example and the last exercise of your NCRT. So let's do it. This is done. This is done. Okay, what do you mean by mutually perpendicular? Sir, like it makes 90-degree angle with Then what is both of what is them. the use of mutually? Why there is a mutually? Like when we have lines in a pair, or we have more than two lines. If I'm having only two lines, then in that case I can say that both lines are perpendicular. But if I have more than two lines, then I have to use, and if they are perpendicular to each other, uh, like A is perpendicular to B and B is perpendicular to C, and C is also perpendicular to A. So in that case, I will say that they're mutually perpendicular. Okay. Yes, So this sir. is the question. You have to show that all the three lines with their direction cosines, all the three lines. Okay, so these are the direction cosines. Okay, are mutually perpendicular. So I think you must know the we got one result, important result, and I told you that you have to remember this result. जिसमें आप perpendicular prove करते थे उसका एक condition होता था डायरेक्शन कोसाइंस से related. Just try this one, and if you can, then please open your cameras. Is it done? Done, sir. Okay. So इसमें you know this formula L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0. This is for any two lines. Okay.
for any two lines. All right. सो वैसे ही आपने इसको किया होगा, इसको इससे रिलेटेड, देन इसको इससे रिलेटेड, और आपके पास जीरो आया होगा. सो दैट मीन दे आर परपेंडिकुलर. अगर इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड यू हैव टू राइट दिस, like you have to write like this, that if L1 is perpendicular to L2, L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, therefore L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, and you have to write in the last that they are mutually perpendicular. Okay, so this step is mandatory at the last of the solution, and you have to show this. Although अगर आप बस दो स्टेप करोगे, ये परपेंडिकुलर प्रूव कर दोगे, यहाँ तक भी सही है, बट ये इंक्लूड करोगे तो सॉल्यूशन थोड़ा सा एकदम कंप्लीट होगा प्रॉपर. ऑलराइट, एनी डाउट? इज इट क्लियर? Yes, sir. So the next question is, okay, tell me one thing, do you have plane in the syllabus? आपके पास लेटेस्ट सिलेबस है सीबीएसई का? I think you don't have plane, you just have lines. That's it. Okay, anyway, I will check. In the meantime, you solve this question. This is easy. Find the question of a line which passes through this parallel to this. Okay, this is the question. Solve this question. Find the equation of a line which passes through the point 1 to 3 and is parallel to the vector this. Easy one. Is it done?
Is it done? Done, sir. तो इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन में? तो सिंपल यहाँ से हो जाएगा ये. This is what r vector I cap plus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda times 3 I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. One line answer. इसमें इतना क्यों टाइम लग रहा है? But in exam you have to write like this. Like this is your position vector. This is a position vector. ये मैंने एक लाइन में लिख दिया, बट आपको एग्जाम में 2-3 स्टेप में करना. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ योर पॉइंट, position vector of 1 to 3, and this is what, this is the, you can say the direction cosine vector, sorry, dr vector, or you can say the simply the direction of this line. ओके, बेटर रहेगा कि आप डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर बोलें इसे. ओके. You can now try this question. Is it visible? Yes, sir. Find the equation of a line in a vector and in a Cartesian form that passes through the point of, okay, आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, डायरेक्शन भी दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म तो इजीली आ जाएगी. द मेन थिंग इज टू फॉर्म द कार्टेशियन इक्वेशन. Done. इज इट डन?
Yes, sir. What's the answer? The equation is 2 I cap minus j cap plus 4 k cap plus lambda I cap plus 2 j cap minus k cap, and the Cartesian form is x minus 2 by 1 is equal to y plus 1 by 2 is equal to z minus 4 by minus 1. All right. What's your answer, Ali? Have you got the answer? Ali, have you got the answer? I'm audible, Ali. Ali, can you hear me? क्लास में है, कहीं और चले गए? Okay, anyway. Okay, so the next, this is the right answer. Okay. The answer is x minus 2 by 1 and y plus 1 by 2 is equals to z minus 4 by 1. सॉरी माइनस 1. और ये कहाँ से आता है हमारे पास? जो हम वेक्टर इक्वेशन लेते हैं उसको हम वी विल इक्वेट दैट वेक्टर विद द जनरल फॉर्म z के कैप से जो भी हमारा वेक्टर होगा उस फॉर्म में हम इक्वेट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे एक्स आई आ जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ विद लेमडा, राइट? आई, यहाँ जे एंड यहाँ के. देन सिमिलरली वी हैव टू इक्वेट दीज टर्म्स. इक्वेट करेंगे तो वहां से मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू लेमडा. तो वहां से नो, X minus 2. एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस टू आएगा. सो वहां से एक्स माइनस टू विल बी लेमडा. एंड सिमिलरली वी विल गेट सम फॉर दिस वाई ऑल्सो, फॉर दिस वाई ऑल्सो एंड फॉर दिस ऑल्सो. सो जो सबका लेमडा होगा दैट विल बी कॉमन. So we will equate that thing and this will give you this answer, x minus 2 y plus 1 by 2 and z minus 1 by z minus 4 by minus 1. Okay. Do this question. Find the position vector of a point A in space such that the OA vector is inclined at 60 degree to OX and at 45 degree to OY, and your magnitude of OA vector is 10 units. You have to find the position vector of a point A. अली, पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था? Yes, sir. This was the answer, x minus 2 over 1
y plus 1 over 2 and z minus 4 over minus 1. This is the next question. Done, sir. Okay. Rest of you. अलीन शामबुन हो गया आपका? Yes, sir. शामबुन आपका? शामबुन आपका हुआ? आई कुछ? नो सर, वाई? इसमें मुश्किल क्या है? You know the relation L square is L square plus M square is equals to 1. What is your L? L is your cos alpha. That is cos 60 degree. And what is your M? M is cos beta, cos 45 degree. And gamma is not given, है ना? वो आपको निकालना पड़ेगा using this relation. So using this relation, your gamma will be cos gamma will be 1 by 2, right? जब आप ये solve करोगे, you have a square term. So you will get cos alpha is equals to plus minus 1 by 2. Okay. You will get cos gamma is equals to plus minus 1 by 2. So why you are not taking minus 1 by 2? Anyone? Why you have not taken minus 1 by 2? When you will solve this, cos square gamma is equals to 1 by 2, right? Sorry, not 1 by 2, it's 1 by 4, 1 by 4. 1 by 4. So from here you will get cos gamma is equals to plus minus 1 by 2. So can anyone tell me why you have not taken minus 1 by 2? Why you have rejected this cos minus 1 by 2? The cos gamma is equals to minus 1 by 2. Why this is rejected? Why? Give me the reason. Ali, अंजलिना रीजन बताइए इसका क्या रीजन था? Why you have not considered this part? और या तो आपने Rectangles डायरेक्टली लिख दिया होगा इसको 1/2. make acute angles, so they are less than 90. That's why. ओके. अली आपका क्या जस्टिफिकेशन इसके लिए? व्हाट्स योर पॉइंट? Uh, sir, because it can't be minus, because
Because Cos. position vector can't be minus. No. Position vector. Where is position vector? No, no. I'm talking about this alpha. Cos gamma. You know that cos gamma, can be negative quantity. Its range is from -1 to 1. So it can be negative. Why we have rejected this part here? You know why? Shamun आपको पता है? Now Shamun will type. Okay, so the reason is Angelina give the right reason. The reason behind this is your gamma is less than 90 degree. इसका रीजन ये है कि जो आपका गामा है, एंगल गामा इज लेस देन 90 डिग्री एंड बिलो 90 डिग्री आपका जो कॉज है दैट इज अ पॉजिटिव. यू कैन सी. ओके. फ्रॉम 0 to 90 योर गामा इज पॉजिटिव. ये आप प्लेन में कैसे देखोगे? जब आप प्लेन में बनाओगे तो आपके पास एक्यूट एंगल ही बनेगा. अगर ये आपका पोजीशन वेक्टर है तो ये इससे, इससे और इससे ये एक ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ही बनाता है. ओके. दैट्स व्हाई this is the reason, and you have rejected this, and your cos gamma is 1 by 2. All right. Yes, sir. Okay. Now you have cos gamma. अब यहाँ से आगे कैसे कैसे किया था आपने सॉल्व? You know your magnitude, you know the direction, so आप easily find कर सकते हो. आपके पास डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर है. What is the direction cosine vector? It's 1 by 2 I cap because cos 60 degree है, cos alpha, and 1 by root 2. Why? Because you have cos 45 degree, and cos gamma आपका कितना आ गया? 1 by 2. So 1 by 2 I cap, 1 by root 2 j cap plus 1 by 2 k cap. This is the direction of your OA vector. Okay. And the magnitude is already given. So just multiply with the magnitude, the direction, and you will get your OA vector. What's your answer, Angelina, for this OA vector? Cap plus 5 root 2 j cap plus 5 k cap. Okay. Ali, have you got the answer? 5 I cap plus 5 root 2 j cap. Yes, sir. शामुन आपका है? आपको समझ आया क्वेश्चन कैसे होगा? No, sir. Can you please explain? No, still not. See, L square plus M square plus N square is equals to 1. This you know. Yes, sir. Can you speak? Can you increase your volume? I think your system volume is low. So this L, and what is your L? L is cos alpha. What is M? M is cos beta. And what is N? N is cos gamma. So as per the question, your alpha is 60 degree because it is inclined. We know that what is alpha? The angle, your position vector is inclined with OX. OX मतलब आपका x axis. आपका जो position vector है OP, और यहाँ पे तो OA दिया है, OA, वो x एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? दिस इज योर अल्फा दैट इज गिवन 60 डिग्री. ओके. अल्फा इज 60 डिग्री एंड बीटा इज 45 डिग्री.
that is inclined with OX, sorry OY, y axis के साथ. So your cos beta is cos of 45 डिग्री. एंड ये यूज करके आप cos गामा निकाल सकते हो. ये आपको गिवन है, ये गिवन है. इस कंडीशन में आप पुट करोगे, यहाँ से आपको cos गामा आ जाएगा. cos गामा आपका ये आएगा 1/4. नाउ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया कि आप कैसे 1/, why you have rejected -1/2, because in this plane your gamma is going to be an acute angle होगा. And for this range of gamma, your cos gamma is going to be a positive number, positive quantity. इस वजह से आपको जो cos gamma आएगा, instead cos gamma is only 1/2, only this one. All right, now you know this, you know your L, M, N, all the values are known. Now what is the direction of any vector? You have position vector, so this is Li cap, Mj cap plus Nk cap. Now you know the value of Lmn. You can easily put in these values and you can get the direction. Okay, so now the direction is done. Direction part is done. Now you know for any vector, if you want to find any vector, so you must know its magnitude and its direction. So in this formula, uh, according to these things, you know your direction. You just find it out. Cos alpha I cap, cos beta j cap, or and cos gamma k cap. You know this. Now this is already given. That is 10. That is 10 units. Okay, so just multiply these two things. This is a scalar multiplication. Okay, scalar multiplication of vector. Oh, sorry, scalar multiplication with vector. Okay, so आपके पास ये आंसर आ जाएगा 5 I cap plus 5 root 2 j cap plus 5 k cap. Is it okay? Is it clear? Any doubts? No, sir. Okay. Okay. Find a vector equation. Find a vector equation of a line which is parallel to vector this, okay, which passes through point. ये कुछ ज्यादा आसान नहीं हो गया. ओके, सॉल्व कीजिए इसको. बहुत सिंपल हो गया. Answer. Answer. Okay, what's the answer, Ali? I cap minus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda 3 I cap minus 2 j cap 6 k cap. Okay. अंजलिना सेम आंसर है. So, Is it same? yes, the same answer. ओके. एंड शामन, आपको समझ आया कैसे? बताइए. जो आपका वेक्टर होता है ना, this is a vector form. This is a position vector plus lambda times your b. I think मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा रखा है concept. This is a position vector of your point.
And this is what? This is direction. Direction. सो आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया है, राइट? ये पॉइंट दिया है, इससे पोजीशन वेक्टर आ जाएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप. एंड यू हैव ऑल्सो गिवन विथ this parallel to this. That means your direction will be same. Okay, so you know the position vector, you know the direction, you can get this answer. Show that this line intersect comes from the bottom intersection. Okay. Show that the line this and this intersects. Also find the point of intersection.
Done, sir. ओ, माइक म्यूट पे था क्या? Okay, how you will prove this? How you have proved? Tell me how you will prove this. आपने कैसे किया? इसके दो मेथड्स हैं. I found the parametric form first, Okay. and then I found lambda and nu, Okay, okay, and okay. and then they were same, like the value of lambda and nu were same. Okay, see. आपके पास तीन इक्वेशन आएगी, राइट? उन तीनों इक्वेशन से यूजिंग द टू इक्वेशन यू विल फाइंड लैम्डा एंड म्यू. ओके, लैम्डा एंड म्यू फाइंड करोगे. और जो आपकी तीसरी इक्वेशन है, you know you have two variables, and for the two variables you have three equations. So from those two equations you can find your lambda and mu, and you can substitute those lambda and mu, the value of lambda and mu, in the third equation. If it satisfies, then uh, then you can say that whatever you have to prove, okay, the lines are what the lines intersect. एंड उसके बाद आप पॉइंट पुट करके वहां पे आप एक्स वाई जेड निकाल दोगे, ठीक है. एंड देयर इज वन मोर मेथड. अगर आपको क्वेश्चन बस इतना दिया होता, like using this above method जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, using this method you can find the points also, okay. But let's say अगर क्वेश्चन इतना होता कि just prove this, that these lines intersect. So can you tell me what is the shortest distance between lines when they intersect? Can you tell me what is the shortest distance between line when they intersect? 0. 0. And you know how to find the shortest distance between two lines if you know two vectors, right? This is a formula that I gave you in the previous class. So just plug in all the values and you can get 0. अगर 0 मिलेगा तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा that they are intersecting, okay. And for the point of intersection you can go with the above method. All right, above method से कर लीजिएगा, सेक्शन पे आ जाएगा. And if the question is only till here, like you have to just show that they're intersecting, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, that use this concept that the shortest distance between two lines will be 0 if they intersect. Is it okay? All of you, is it okay? Yes, sir. Ali and Shambun. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's do some previous year questions. Before doing previous year, you have some good questions. Wait. Angle between lines are done. Prove the intersecting is done. Okay, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास तीन चार पॉइंट दिए होंगे
ओके, यू हैव ए बी सी डी 4 पॉइंट्स, एंड आपको बोला गया होगा लाइक प्रूव दैट द लाइंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट द लाइंस थ्रू अनदर 2 पॉइंट्स। उस केस में आपको वही इक्वेशन पहले फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म से निकालने के बाद आप उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर सकते हो। वहां तक आपको इस मेथड से इसलिए जाना है क्योंकि आपको बस बताना है कि दे आर इंटरसेक्टिंग। ओके ओके, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन। आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। Prove that the line through this intersect the line through C and D। इसमें इंटरसेक्ट बोले तो इसमें आप इस मेथड से जा सकते हो, इस मेथड से स्टैंडर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जीरो होगा, इस मेथड से आप जा सकते हो। आंसर। ओके, सो हैव यू प्रूव्ड सर। व्हाट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? जीरो आ रहा है? सर। जीरो आ रहा है ना? आपके पास 2 पॉइंट है, सो या तो आप
कार्टेशियन मेथड से चाहिए या तो आप वेक्टर फॉर्म डायरेक्टली बना लीजिए उससे। ओके, हाउ यू विल फॉर्म द हाउ यू विल मेक अ वेक्टर फॉर्म यूजिंग दिस 2 पॉइंट्स। आप किसी एक पॉइंट को ले लीजिए उस लाइन के ऊपर। ओके, यू कैन टेक एनी पॉइंट फ्रॉम दिस ए एंड बी ऑन दिस लाइन, ए बी line, and using both the points you can find the direction ratio. So that is going to give the direction of your AB vector, and you can take any point. So that point will represent A vector, that is a position vector, and you have your AB vector, that is direction of AB vector, that is B vector. So this can be converted into a vector form, and similarly for C and D. ओके, उसके बाद दो इक्वेशन आ गई आपके पास। A1 A2 तो आ ही गया है, ये A1 हो गया, इस लाइन का कोई एक पॉइंट हो गया, इस लाइन का कोई एक A2 पॉइंट हो गया, एंड जो भी यहाँ से ए बी से डायरेक्शन रेशियो आएगा दैट इज B1, एंड फ्रॉम सी एंड डी जो भी आएगा वो B2, यूजिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला। यहाँ पे फार्मूला पुट कीजिए, आंसर की 0 आ जाएगा। सबका आ गया आंसर? Yes, sir. शामुन आपका है? Yes, sir. ओके गुड, ओके गुड, ऑल ऑफ यू गुड। गुड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हैं इसमें, मतलब थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। Find the equation of a two lines through the origin which intersect the lines this the line this at angles of pi/3 each। इसको इसका इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, यूज इमेजिनेशन एंड ट्राई टू मेक अ डायग्राम। डायग्राम से आपको बेटर क्लियर होगा थोड़ा। Find the direction of lines, sorry, equation of lines making each pi/3 each, angle of pi/3 each। लाइन से वो जो दो लाइंस है वो pi/3 एंगल्स बनानी चाहिए, दोनों दोनों लाइंस।
Is it done? समझ आ रहा है क्वेश्चन ये वाला? Anyone got the answer? अंजलि ने आपका आंसर है? नहीं? Doing so. Okay. Shamvon, could you please explain? Okay. Okay, let's see. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था. ठीक है. तो दिस इज योर एक्स वाई प्लेन. ओके. नाउ क्वेश्चन क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टू लाइन थ्रू द origin. थ्रू origin 0,0,0. ठीक है. एंड थ्रू origin which intersect this line at ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है. intersect this line, ये जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, this line at angle of pi/3 each. that mean यहाँ से आपके जो origin है वहां से कोई दो लाइन होगी जो आपके इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी एट pi/3. अब ये समझ आया? इसलिए बोल रहा था इसमें पहले आप डायग्राम बना के थोड़ा सा ट्राई कीजिए समझने का. इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा. लाइन कभी सीधा नहीं बनता है क्या? ओके. दे आर मेकिंग pi/3 with this line. That means this is pi/3, that is 30 degree. This is 30 degree. Alright. तो ये सब 30 डिग्री दिया हुआ है आपको. और इस लाइन की इक्वेशन, अली आपका आंसर आया था इसका? नो सर. ओके. सो इस लाइन की इक्वेशन है वो है x-3/2. अंजलि ने आपका आंसर? I maybe sir. I got two answers. दो ही आंसर आएंगे बिकॉज यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकंड वन. ओके, टेल मी द Yes sir. आंसर. For the P1 point, like line passing through P1, I got x/1 is equal to y/2 is equal to z by -1. ओके, दैट्स राइट. And फॉर then द for the सेकंड वन? second one, x by -1 is equal to y/1 is equal to z by -2. नाइस, गुड. वो द आंसर आर राइट. बहुत अच्छा. सबसे पहले आपको ये चीज बनाना इंपॉर्टेंट था. आपको इमेजिन करना था कि कैसे ये चीज हो रही है. ओके. फिर उसके आप एक बार डायग्राम बना लोगे, तब आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे देन यू हैव मल्टीपल स्कोप्स जहाँ पे आप फॉर्मूले सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या लग सकता है. अगर दो लाइन का आपको डी आर पता है ना, एंड समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम वंस डी आर, एंड इफ यू नो द एंगल बिटवीन टू लाइंस सो यू कैन गो विद दैट मेथड ऑल्सो. जहाँ पे आपको डी आर पता होता है और आप एंगल निकालते हो दो लाइन के बीच का. बेसिकली यही कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में भी, इसीलिए डायग्राम इम्पोर्टेंट था. आपने ऐसे किया था अंजलि ना? So
let's do x by 3 by 2, y minus 3 by 1, and z by 1. Okay, so okay, we have to take any point on this line. Okay, let's say this, let's give some name on this point. Let's say this is O and this is P. Okay, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको मैं लैम्डा की इक्वल मान सकता हूँ यहाँ पे. इसको मैं मान सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा. ओके, so my so the value of x will be 2 lambda plus 3, value of y will be lambda plus 3, and z will be lambda. So this is a method जो जिससे आप किसी भी लाइन पे एक कॉमन पॉइंट निकाल सकते हो. कॉमन इन द सेंस, सॉरी, नॉट कॉमन, जनरल पॉइंट. So this x y z is the general coordinate on this OP line. Okay, so you can assume anything, like you can assume this as a O point. आप इसको मान सकते हो as a O point. आप इसको मान सकते हो O point है ये x y z coordinate. Okay, now you know this O point, and let's say this is, इसको आप origin मानोगे तो इसको P नहीं, इसको Q मानो, इसको O मानो. Okay, this is a Q point. So you know what is the direction ratio of PQ? DRs of PQ, that is 2 1 1. यही है डायरेक्शन रेशियो. क्या है PQ का? 2 1 1 है, राइट? इज इट ओके ना? इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो सर. ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 1 1. एंड यू नो दैट अगर आपके पास दो लाइन है, आपके पास अगर दो लाइन है, अगर आपको इसका, इस लाइन 1 का एंड लाइन 2, इन दोनों लाइन का अगर आपको DR पता है, ओके, डायरेक्शन रेशियो पता है, सो यू कैन फाइंड दिस थीटा. ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला. यहाँ पे क्या है, हमें इसका DR नहीं पता है. इन दिस केस we do not know what is the DR of this line. Let's say this is L1 and this is L2. We do not know what is the direction ratio of L2 line. Okay, उसके लिए क्या करना होगा मुझे? I know this Q point now. I know my Q point is XYZ and this O point is 0. So what will be the DRs of your OQ? OQ लाइन का DR क्या होगा? इसका X component -0, that is 2 lambda plus 3 minus 0. 2 lambda plus 3 minus 0 is again 2 lambda plus 3, and similarly lambda plus 3 minus 0 and lambda minus 0. So this is what, this is a DR of OQ line. OQ line. Okay, now you know this formula. अगर किसी लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो उससे आप क्या कर सकते हो? अगर किसी लाइंस का आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो उसके बीच का एंगल निकाल सकते हो. दिस इज अ फॉर्मूला. ये फॉर्मूला होता है, क्या है फॉर्मूला? A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल्स टू C1 C2. ये जनरल फॉर्मूला था. यहीं से दो कंडीशन डिराइव होती है. L1 L2 plus M1 M2 is equal plus N1 N2 is equals to 0 for perpendicular case. L1 by L2 and M1 by M2 is equals to N1 by N2 for the parallel case. यहाँ से दो कंडीशन डिराइव करते हैं हम. If cos theta is 90 and if cos theta is 0 degree. So this is a general. Okay, this is a general formula for finding the angle between two points. Angle between two lines. If you know the direction ratios of those lines. Okay, so now we know what is these things है ना. ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है. This is my A2, A3, sorry, A2,
A2, B2 and B3 again, P2 and C2. ये क्लियर हुआ? नाउ जस्ट पुट ऑल द थिंग्स इन दिस फॉर्मूला, यहाँ पे पुट करोगे. ओके, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस बिकॉज वी हैव टू डू सम मोर क्वेश्चंस. सो इसके बाद जब आप पुट करोगे तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा. लैम्डा आपके पास दो दो वैल्यूज आएगी. लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 एंड -2. ओके, ये दो वैल्यूज आएगी. अब इन दो वैल्यू को निकाल के आप इसमें पुट करो. आपके पास दो कंडीशन, एक एक ये वाला पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा ये वाला Q वाला पॉइंट, और एक पॉइंट आएगा P वाला पॉइंट. वाई? बिकॉज यू हैव टू वैल्यूज. दो वैल्यूज के लिए आपके पास XYZ आएगा एंड XYZ इसके लिए भी आएगा. दिस इज योर O पॉइंट, सॉरी दिस इज अ Q पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट. ओके, एनीथिंग. तो वहां से आपके पास ये दोनों पॉइंट आ गए, ये दोनों पॉइंट आ गए. अब इस दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. ओके, सिंपल हो जाएगा. इज इट ओके? किसी को डाउट है कुछ? Ali, is it clear to you? Yes, sir. Shamwan? Yes, sir. Angelina? Okay, Angelina done. Okay, so let's move to our next question. Okay, we have 10 minutes, so should we do a quiz? या फिर एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा और अच्छा. Okay, do this question. क्वेश्चन करते हैं, बाद में क्विज देखेंगे. रिवीजन में तो क्विज ही करना है बस. फिर आप लोग से 1 घंटे में 20-20 30-30 क्वेश्चन करवाऊंगा. प्रैक्टिस. Okay, do this one. Find the foot of perpendicular from point this to the line this. Also find the perpendicular distance from the given point to the line. Easy question है वैसे, बहुत आसान है. Remember this thing, before starting with the equation of a line, even in a Cartesian form, first of all you have to make the equation of a line in a standard form. Okay, then proceed with the solution.
Remember this thing that if you want to find the direction ratio of a line, you need at least 2 point. Is it done?
हुआ किसी को? Sir, एनीवन? किसी का हुआ? done, sir. डन। ओके अंजलिना। अली आपका हुआ? यस सर। श्यामवन? Yes, sir. ऑल ऑफ यू डन? गुड। बताइए अंजलिना कितना आ रहा आंसर? व्हाट इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज अ डिस्टेंस? Perpendicular is 2, 6 minus 2. ओके। And the distance, perpendicular distance is 3 root 5. 2 6 minus 2 and perpendicular distance is 2 root 5. 3 root 5. Okay, 3 root 5 units. Okay, और किसी का आंसर आया ये चीज? सर। Ali and Shamun, have you got the same answer? यस सर। ठीक है, अली आपका सेम आया। यस सर। इसमें कंसेप्ट ये था कि ये लाइन का आपको अगर डी आर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ओके, इस पे आप इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। इस पे आप एक कॉमन पॉइंट निकालोगे। नो, इस लाइन का दिया हुआ है। इसका आप एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसका आप एक कॉमन पॉइंट निकालोगे जो इस लाइन पे लाई करेगा, ओके। एंड दो पॉइंट की हेल्प से इसका डी आर निकालोगे। एंड इस लाइन का ऑलरेडी दे रखा है 2 6 एंड 3। सो यूजिंग these conditions, if they are perpendicular, so L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, this is 0 फॉर द परपेंडिकुलर केस। ये होता है, फिर वहां से आपका लेमडा आ जाएगा जो भी आपने सपोज किया होगा, उसके बाद पुट कीजिएगा, आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा और जो भी आपका डिस्टेंस है वो आ जाएगा, राइट। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट इन टूडेज क्लास? मैंने आपका सिलेबस चेक किया, you have only these much of concepts. Beyond this, we do not have any type of concept like that includes the plain questions. प्लेन वाला पार्ट completely omitted आपके सिलेबस से, इसलिए बहुत कंसाइज चैप्टर हो गया, बहुत लेंदी चैप्टर होता है, बट बहुत छोटा हो गया चैप्टर ये। यू हैव ओनली डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन joining 2 point, कार्टेशियन इक्वेशन and vector equation of a line, skew line, shortest distance between two lines, and angle between two lines. That's it. All right. As per the latest CBSE syllabus. Okay, so किसी को कुछ डाउट है? So, Anyone? नहीं डाउट? No doubt. Okay. Okay, so from the next class we will start with the revision. And किसी का भी नेक्स्ट एग्जाम है क्या कभी? ओके, डू वन थिंग, जिसका भी एग्जाम होगा, एक काम कीजिएगा, अपना सिलेबस जो होगा आपका लेटेस्ट, सॉरी लेटेस्ट नहीं, जो आपका एग्जाम का सिलेबस होगा जो आपके पेपर में आएगा, प्लीज शेयर विद द ऑपरेशन टीम, ओके, बिकॉज आई वांट टू चेक द कॉमन चैप्टर्स सो दैट वी कैन स्टार्ट विद रिवीजन ऑफ दोज चैप्टर्स, ठीक है, जो आपके लेट नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे उसमें आ सकेगा। ऑलराइट, ओके देन यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू फॉर द क्लास। अल्लाह हाफिज।